हेलो टीचर्स, ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे इस चैनल के नए नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एनआईएस का जो प्रैक्टिकल कोर्स 511 स्कूल बेस्ड एक्टिविटी का जो तीसरा भाग कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम का पार्ट 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल इन द स्कूल के बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो पिछला SBA जो देखा है उस सेम फॉर्मेट को यूज़ करना है। इसमें आपको टीचर का नाम लिखना है, पहले इनरोलमेंट नंबर देनी है, क्लास कौन सी क्लास के साथ आप या फेस्टिवल कर रहे हैं उसका नाम देना है, एक डेट, किस डेट को आप कर रहे हैं और टाइम ड्यूरेशन देना है। आइए देखिए, मैंने एक सोशल फेस्टिवल को लिया है, रक्षाबंधन या राखी। फर्स्ट में देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिपरेटरी एक्टिविटी फॉर कंडक्टिंग द फेस्टिवल। राखी और रक्षाबंधन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड इंडियन फेस्टिवल। आपको एक डिस्क्रिप्शन देनी है। इट इज commemorate in the Shravan Mass on a specific full moon day or Purnima and is given different names in different parts of the country, such as Rakhi Purnima Northwest, Kajri Purnima Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Nariyal Purnima Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Goa, Upakumari or Avani Avitam in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala, and the Pavitropana in certain section in गुजरात। तो इस प्रकार आप रक्षाबंधन का अलग अलग नाम है, इसे आप एक डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। अब देखिए उसके बारे में आप क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं एक डिस्क्रिप्शन छोटा मैं बनाया हूँ। Rakhi is a symbol of harmony in India. The Raksha Bandhan festival represents the spirit of fraternity. It is a traditional way to celebrate the unconditional love between siblings. The word Raksha means protections and Bandhan signifies bondage. Rakhi is a sacred thread which is available in various colors and designs. The sister ties these threads on her brother's wrist to protect him from all types of negativity in life. The brother also vows to protect his loving sister by offering her a suitable gift. This festival that glorifies precious emotions of love, care, and affection usually falls in late August. There is no dearth of festivals in India. Raksha Bandhan is celebrated with great enthusiasm across India and in other countries of the world where Indians reside. To Indians, a festival is the combination of gifts and special dishes in a cheerful environment in which songs and dance have key roles, as it is traditional way to celebrate the bondage between siblings. So people wear traditional clothes on this auspicious day. Men generally wear kurta, pajama and women go for sari or salwar suits. The ritual starts by offering a prayer of God, following which the sister pray for the prosperous futures of her brother by tying the sacred threads of Rakhi on her brother's wrist. To respect his sister's love towards him, the brother offers a nice gift that makes the moment memorable. The celebration does not end here. Various types of foods, especially sweets, have a special part in this context. Through these types of simple rituals, Rakhi strengthens the bond between brother and sister. तो इस प्रकार आप डिस्क्रिप्शन दीजिए। ऑब्जेक्टिव्स आपको देना है,
जिस प्रकार आप पिछले सारे SBA में ऑब्जेक्टिव दिए हैं उस प्रकार ऑब्जेक्टिव देने हैं आपको। Rakshabandhan is the festival of Rakhi. This is festival to celebrate the bond between a brother and sister. It is celebrated on Shravan Purnima. The brother pledges to protect his sister in every birth. To symbolize this, he allows her to tie a string on his wrist. The sister complies so that he keeps his promise since time immemorial. Yes, immemorial है. This custom is prevalent to keep a brother and sister in a relationships. The Rakhi is a symbol of the purity of relationship between a sister and brother. अब यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स भी देने हैं. Just as the brother is bound by a promise to protect the sister after getting a string tied onto his wrist, the sister too prays to God for his protection. The principle of Sri Ganesh and Sri Saraswati descend on earth in higher proportion on this day. Both benefit from these principles by paying for each other's protection. तो इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव्स देनी है रक्षाबंधन का. अब देखिए स्टेप टेकन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेस्टिवल. नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टेप टेकन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल. Rakhi festival is an important part of Indian culture, tying everyone into the bond of love and unity. This is the one of the best occasion to educate the kids about the traditional values. The children are very sensitive and intelligent, so the best approach is to make everything interesting and fun. This Raksha Bandhan, try out these simple ideas to engage your kids is an extraordinary approach to teach them the core values of Indian culture. Storytelling from the Indian mythology, आप एक एक पॉइंट बना के इसमें रखना है किस प्रकार की जाती है. इंस्पायर द किड्स टू मेक राखीज एट होम. टीच योर किड्स टू प्रिपेयर द राखी पूजा थाली. अरेंज अ कंपटीशन फॉर द किड्स. तो इस प्रकार आपको स्टेप लेना है किस प्रकार आपको रक्षाबंधन का स्टेप जो है आप ले रहे हैं अपने विद्यालय में. एक बार और देख लीजिए. Procedure next देखिए procedure the organizing the festival. Rakhi is celebrated to rejoice the fraternity of brother and sister. It signifies the whole-hearted love and care of the sister for her brothers and the vows of the brothers to provide protection to his sister from all sorts of difficulties. However, the preparation of the function start almost 2 weeks before the day. Shops begin to offer colorful Rakhis, special sweet and exclusive gifts at discounted prices, while brothers and sisters living at distances start planning for celebrating the actual day with much delight and enthusiasm. On the auspicious day of Rakhi, the sisters has her bath early in the morning and gets ready for the rituals by putting on a new clothes. At first, the family deities are worshipped. For this, she prepare the puja thali by arranging the beautiful Rakhi threads, roli or kumkum powders, saffron or turmeric powders, etc. Akshat, rice grains, diya, metals or earthen lamps, agarbattis, incense sticks, variety of sweets and money on the plate nicely. The holy threads of Rakhi is also worshipped during this time. Meanwhile, the brother is seated at a clean and calm place after making the offering
to the god. The sister memorizes her ancestors and take the blessing of the elderly members of the family. After that, she comes to her siblings with the thali and perform his arti. She then ties the pretty and holy threads of Rakhi on the wrist of her brother's right hand. The tilak is made on his forehead with the kumkum powder. The rice grains are dispersed on his head. The money is given out among the poor after moving around his head, which is considered as a ritual for safeguarding him from the evil eye. Finally, she offers sweets to his lovable brother. नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम इनकाउंटर फॉर कंडक्टिंग द फेस्टिवल। तो प्रत्येक चीज़ का एक एक प्रॉब्लम होता है जितने भी आप फेस्टिवल को यूज़ किए। देखिए मनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ मनी मेनी पीपल्स कैन नॉट एंजॉय द फेस्टिवल्स। Slot distribution. After you raise fund and has budget, the real nightmare starts for the organizers. Everyone wants to be in the early slots and no one wants to take the ending slots. एक एक जैसे आप रक्षाबंधन को ऑर्गेनाइज इस विद्यालय में कर रहे हैं या स्कूल में कर रहे हैं तो क्या होता है बच्चे लोग सबसे कहते हैं मैं पहले जाऊंगा तो इसी प्रकार इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। मैनेजमेंट देखिए even after slot are decided, the next problem is to the management. Give them cue card and handle is smoothly. Organizers have to be breathless rush for that. Some of the faculties देखिए faculties के बारे में इसमें भी मैंने कुछ दिया हूँ। Mischievous students देखिए against they are common in every schools and college. They take no responsibility, no part, nothing for them. Such event means be drunk, have fight, comment and break chairs into the last row, misbehaving outsiders, etc. The organizers have to be aware of them too. तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होते हैं फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते टाइम। नेक्स्ट देखिए सोल्यूशन इन बेसिस रिलेटिंग टू द फेस्टिवल्स। फर्स्ट में देखिए हमने मनी प्रॉब्लम्स दिया है, किस प्रकार मनी प्रॉब्लम्स जो है था उसका सोल्यूशन देना है। दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी मैनेज बाय अरेंजिंग द फंड्स फ्रॉम द स्कूल्स कमेटी। तो आपको स्कूल कमेटी के द्वारा जो फंड को मैनेज करना है। नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट को आपको सही रखना। इवन ऑल्सो द स्लॉट्स आर डिसाइडेड, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू मैनेज देम, गिव देम क्यू एंड हैंडल टू स्मूथली। ऑर्गेनाइजर्स हैव टू बी ब्रेथलेस रस फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए सम ऑफ द फैकल्टीज, मैंने ऊपर का पॉइंट को ही यहाँ नीचे देखिए इसको डिफाइन किया है। मिस्चीवियस स्टूडेंट्स, बस सेम पॉइंट हमने दिया है, उसी पॉइंट को हमने यहाँ रखा है, एक बार और देख लें। मनी प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट, सम ऑफ द फैकल्टीज, मिस्चीवियस स्टूडेंट। लास्ट पॉइंट देखिए इम्पैक्ट ऑफ द फेस्टिवल्स ऑन स्कूल एनवायरनमेंट। Rakhi festival that is celebrated in our country is also associated with a history from the old grandmothers or grandfathers that gives an insight into a deeper spiritual significance of every festival as well as the underlying the celebration. These are the common part, and these stories reach out the ordinary people in a way that dry theological fact cannot. Diwali, Dasara, Raksha Bandhan, etc. are few religious festivals of India that have significance of their own and some spiritual significance related with them. These festivals are celebrated by different communities, but they are celebrated as a whole. We can see festive atmosphere as well as colorfulness everywhere in India. The festivals are not really for just holiday. Every festival has its own meaning and related beautiful to life and brings in lots of happiness, color and prosperity of our lives. एडवांटेज देखिए, एडवांटेज मैंने दिया है। एडवांटेज ऑफ फेस्टिवल्स, इंक्रीमेंट ऑफ रिलेशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल, दे आर अ चांस टू बी
populace of group to impart their inclination and the trade their thoughts additionally help to examine their uses additionally. If we consider the families they assemble and have a great time with all the relatives, why who are incredible mental unwinding and advanced family relations, build social relation and social correspondence which prompt solidarity among the individuals. लास्ट इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स अस सेविंग आवर सोसाइटी एंड लेगेसी. नेक्स्ट, द प्रेजेंट एरा थिंक अबाउट आवर ट्रेडिशनल एंड ओट्स ऑन एमाइड दीज फेस्टिवल्स. तो दोस्तों ये रहा आपका विद्यालय में और एक सोशल फेस्टिवल के बारे में. मैंने एक सोशल फेस्टिवल रक्षाबंधन के बारे में मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है और लास्ट में देखिए आपको साइन करना है. सिग्नेचर ऑफ द 10 टीचर, काउंटर सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विथ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द मेंटर एंड सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर. तो दोस्तों इस प्रकार आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए अपने आप से. मैंने एक रक्षाबंधन का दिया है, तो आप किसी अन्य टॉपिक पे नोट तैयार कर सकते हैं. तो दोस्तों मैंने स्कूल बेस्ड एक्टिविटी का पार्ट तीसरा 3 पार्ट्स कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम का सारे जो है वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ. आप लोग आराम से इसे PDF फाइल से डाउनलोड करें और अपने जो है SBA को सही तरह से तैयार करें. दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल को देखने के लिए. दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनों मित्रों को भी शेयर करें.